हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि एक BMI कैलकुलेटर कैसे डेवलप करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर यूजिंग Kotlin। सो पहले हम BMI कैलकुलेटर का डेमो देख लेते हैं तो कैसा होगा। ये मेरा BMI कैलकुलेटर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंटर आवर वेट। हमको अपना वज़न डालना पड़ेगा। सो सपोज़ हमारा वज़न है 75 किलो एंड हमारा हाइट है सपोज 145। सो लेट्स सी व्हाट इज द BMI ऑफ एंड इट shows it is overweight. So our BMI is 35.63. So as you know, the BMI is calculated using the formula of kg/m². So हम लोग वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे. So again, if I say if I add 65 as weight and height is 165, suppose height हमारा 165 है, so हमारा BMI होगा normal. So as you see, also the background is also sense with the tips. अगर हमारा BMI नॉर्मल है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ये वगैरह टिप्स हैं. अगर हम वेट को 45 कर देते हैं एंड हाइट हमारा 165 है तो हमारा BMI अंडर वेट हो गया. सो अगर हमारा वेट अंडर वेट है तो BMI है तो हमको do not drink water before meals and use bigger plates. So this kind of tips so we need to add. So हम इस वीडियो पर यही BMI कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे. सो इस पहले पार्ट पे हम लोग BMI का ये जो UI है, ये दोनों UI जो है ना, ये पहला एक UI और ये दूसरा UI, ये रिजल्ट वाला UI, ये दोनों UI हम क्रिएट करेंगे पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हम लोग इसका फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे. सो हम पहले ये जो हमारा मेन एक्टिविटी है हम पहले ये डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट एक्टिविटी को डिज़ाइन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डिज़ाइनिंग आवर मेन एक्टिविटी. सो पहले हम लोग जाएंगे और पहले हम कलर ऐड करेंगे. सो हमारा प्राइमरी एक काम करते हैं, मैं थीम चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर. सो हमने ड्रागोलग कर लेते हैं. ओके, सो हमारा प्राइमरी कलर है ये. सो लेट्स चेंज द प्राइमरी कलर टू 1 accent is yellow, so see 520. So ये हमारा हो गया. So let's add some extra color. सो इसके बाद हम लोग एक थीम क्रिएट करेंगे फॉर आवर मेन एक्टिविटी. सो
what you need to do, suppose in main app theme, which is parent from no action bar, app component like no action bar, and suppose there is a color primary. Let's copy this and paste it here, and color primary is color primary dark, accent is accent. Simply done. For the result also we need one theme. Suppose copy this and paste it here. Sorry, result theme, which is also parent from the no action bar, and here primary, we don't need color primary and color action. The primary dark is white, color white. Sure, that's now close this and go to a manifest file, and here there is no logo, there is no round icon logo, so we will add this in later. So here app theme is sends to main app theme. Okay, now let's go to our main layout file. So sends this to linear layout. So फर्स्ट मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को समझा दूंगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। और ठीक है, तो पहले मैं लेआउट को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अभी हमें यहाँ पर लोगो चाहिए और हमें कुछ ड्राइवर भी चाहिए। सो मैं ड्राइवर और लोगो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमारा कुछ ड्राइवर है और ये हमारा लोगो है। सो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ये सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन द ड्राइवर फोल्डर। Put our logo here, image view 160 dp and 120 dp. Okay, sorry, source is BMI logo. So एक काम करते हैं, हम हमारा बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कलर प्राइमरी, ये हमारा बैकग्राउंड है। सो ये हमारा लोगो हो गया। सो ये लेआउट ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी सेंटर कर देते तो ये सेंटर हो जाएगा। उसके बाद हम एक टेक्स्ट व्यू लेंगे जो होगा वेब कंटेंट टेक्स्ट विल बी BMI के और ऐप नेम साइज होगा आपका, टेक्स्ट साइज होगा आपका 22 SP, मार्जिन टॉप होगा आपका 3 dp and color will be white. So will be white. Let's add a font family in this text. So डिज़ाइन पे जाके टेक्स्ट व्यू पर सिलेक्ट करके यहाँ पर ये जो फॉन्ट फैमिली है, यहाँ पर जाके ये जो प्रोजेक्ट के लिए पॉपिंग बॉल एंड पॉपिंग सिंबल है, तो हम यहाँ पर पॉपिंग बॉल ले लेते हैं। So that's it. BMI calculator. Let's add some letter spacing 0.04. Okay, that's it. It's look good. Then below this linear layout,
okay, another linear layout, match parent content, orientation will be horizontal, gravity center, margin top 40 dp. Okay, before that let's add one text view. So match panel wrap content, text will be please fill your information here. So color will be white, size will be 18 sp, family pop-in, semi-bold letter spacing 0.03. okay, that's it. Margin top, let's say the margin top 60 dp. okay, so that's it. Now upload this in here in linear layout, and image view 20 dp, source is, our source is here weight. So first we need weight, so tint white. so ये आ गया हमारा weight का image. so content description and sports. so ये हो गया हमारा image view. उसके बाद we need one view. so suppose view ये हो गया, यहाँ पर weight हो गया 1.5 dp and height suppose 28 dp. Background is gray. okay, color gray. Margin start 16 dp, margin and 16 dp. okay, so then we have one linear layout, match parent wrap content, and which will be orientation will be vertical. okay, so now add one text view, wrap content, text will be interior weight, size, text size is 13 sp, color will be white, font family of pins, letter spacing 0.1, include padding fonts. yeah, that's it. Then I need one edit text. for entering the weight. So this will be match parent wrap content. Let's add one id will be suppose weight, edit text. okay, so size, text size will be 15 sp, and hint will be 65, 65.5, etc. okay, so text color is in white, and hint text color will be gray. okay, and the font family will be pop-in semi-bold, and include padding false, and input type will be number decimal. Sorry, you can also add the point also, that's why I will use number decimal. And the padding, let's add some padding. Top is 6 dp, padding bottom will be 6 dp,
So that's it. Wait. Photo fill is no. Okay, so that is look good. So this is our weight, and we just need to copy the whole this linear layer for the next height. हमारे हाइट के लिए हमको इसको कॉपी करना पड़ेगा, और हमको सिर्फ दो ही चीज़ को चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे इंटीरियर हाइट and this will be height, and hint is suppose 145, so 145 comma suppose 165.5 etc. Okay, so this will be hint. So next, okay, so यहाँ पर एक काम करते हैं. यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर एक ब्लैक कलर का नीचे जो एडिट टेक्स्ट में हमारा ब्लैक कलर का एक लाइन आ रहा है, सो हमको ये हटाना होगा. सो लेट्स रिमूव दिस. सो बैकग्राउंड टिंट विल बी कलर प्राइमरी. सो एज यू सी this is remove, and same we need to do in here also in the width section. So background tint will be color primary. Also we need to add one view for the separation in after this linear layer. इसके बाद हम एक व्यू को ऐड कर देते हैं for the separation, so it's look good. So background will be gray. Background will be gray. Margin स्टार्ट होगा 24 dp, मार्जिन एंड होगा 24 dp. so that's it. so ये हम कॉपी कर लेते हैं. एक काम करते हैं, मार्जिन हटा देते हैं. उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं. okay, now we need one button. For calculation. जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट शो होगा. सो बटन ये होगा वेब कंटेंट, इसका आईडी होगा कैलकुलेट बटन. बैकग्राउंड अभी के लिए तो येलो रख देते हैं. टैक्स होगा कैलकुलेट BMI. फॉन्ट फैमिली हो जाएगा पपिंग पोल्स. लेटर थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं, 2 कर देते हैं. इसके बाद साइज will be 16 sp. gravity will be center, and margin tops was 48 dp. yeah, it's look nice, but let's add some padding here also. 14 dp. okay, now it's look good. okay, so this is the design for our main layout. Now we need to design for our result layout. For that we will need to create one new activity, empty activity, which is result. Result activity. ओके, रिजल्ट एक्टिविटी को डिज़ाइन करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं. हमारा जब हम रिजल्ट को शो करेंगे तो हम लोग ने देखा था कि हमारे बैकग्राउंड चेंजेस होता है. जब नॉर्मल होता है तो बैकग्राउंड ग्रीन होता है, जब ओवरवेट होता है तो बैकग्राउंड रेड होता है, और जब अंडरवेट होता है तो बैकग्राउंड येलो हो जाता है. सो पहले हम उस ड्रॉएबल रिसोर्स को क्रिएट कर लेते हैं.
हम रिजल्ट एक्टिविटी को रिजल्ट के यूआई को डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो चेंज दिस टू लीनियर लेआउट।
पूरा कोड देख लीजिए। ये तो सिंपल डिज़ाइन था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका फंक्शनैलिटी कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम लोग ने एक नंबर डाला और यहाँ पर हम लोग ने नंबर डाला और हम लोग वो फार्मूला BMI का फार्मूला kg/m² का फार्मूला यूज़ करके हम लोग BMI को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर एज यू सी हम लोग यहाँ पर वेट को सेंटीमीटर में दे रहे हैं। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम लोग वेट को सपोज़ वेट को हम लोग kg में दे रहे हैं और किलोग्राम में, और वेट को हम लोग यहाँ पर मीटर पे देंगे। लेकिन हम लोग इस मीटर को सेंटीमीटर पे देंगे, सेंटीमीटर। लेकिन हम इस सेंटीमीटर को मीटर तक कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग फार्मूला को यूज़ करेंगे और कैलकुलेट BMI कैलकुलेट करेंगे। सो ये रहा UI। सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम लोग कैसे BMI को कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, हम लोग ने पहले पार्ट में देखा था कि हम लोग ने BMI कैलकुलेटर का मेन लेआउट एंड रिजल्ट लेआउट क्रिएट किया था। ये था हमारा मेन लेआउट। ये था हमारा मेन लेआउट जहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे वेट एंड हाइट, और ये था हमारा रिज़ल्ट जहाँ पर हमारा BMI कैलकुलेट होगा और ये यहाँ पर शो होगा विथ टिप्स। सो हम पहले मेन लेआउट पर काम करेंगे। सो गो टू योर मेन एक्टिविटी फाइल। सो पहले हम लोग ने कैलकुलेट बटन क्रिएट किया था, ये वाला कैलकुलेट बटन। सो जब हम कैलकुलेट बटन को क्लिक करेंगे सो हम यूज़र से 2 इनपुट लेंगे, वेट एंड हाइट। ये कैलकुलेट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। सो पहले हम चेक करेंगे कि हमारा वेट एंड हाइट एम्प्टी है या नहीं। अगर वेट टेक्स्ट इज नॉट एम्प्टी एंड वेट एडिट टेक्स्ट इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हम वेट के वैल्यू को हम एक वेरिएबल लेंगे वेट, और हम उस वैल्यू को वेट के वैल्यू को हम इस वेरिएबल में पुट कर देंगे। डबल, क्योंकि हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं सो हम इसको डबल स्ट्रिंग से डबल तक कन्वर्ट करेंगे। सेम फॉर द हाइट। That's it. Now we need to check the condition for weight and height, because हम height 600 kg से ज़्यादा नहीं लिख सकते और हम height को हम 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते और weight को हम 600 kg से ज़्यादा नहीं ले सकते। So first here we need to check the conditions. Okay, weight greater than 0 and weight less than 600 and height is greater than equal 0.50 and height is less than 2.5. Okay, ये तो हो गया हमारा कंडीशन। लेकिन हमने पहले बोला था कि हम हाइट को यहाँ पर सेंटीमीटर पे लेंगे। सो हम सेंटीमीटर को मीटर तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम इस पर डिवाइडेड बाय 100, दैट्स इट। सो इट विल बी कन्वर्ट द सेंटीमीटर टू मीटर। सो नाउ वेल इंटन इक्वल टू इंटन
मेन एक्टिविटी हम जब रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट एक्टिविटी डॉट टू प्लस द जावा। ओके, जब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम कैलकुलेट BMI को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेट एंड हाइट, एंड we will send that data to the result activity using the put extra. Here BMI is the name, it's like a kind of ID. So for now we need to create the function for calculate BMI. So now below this create a private function calculate BMI weight is in double and height is in also in double, height also is in double, equal to big decimal weight, divided by height into height, because our formula is weight divided by meter square. So here height will be in square, height into height. So big decimal height into height dot set scale to dot around half even. So here actually so here actually we take the value into the half even. Rounding mode is half even. That means rounding mode to round towards the nearest neighbor. Here suppose the value is 2.45000037. Our BMI, when I calculate BMI, we got a result like 2.0245678 that kind of series. So here we will rounding that into 2 scale. So after decimal point we will get 2 value, 2 decimal point, and it will be in rounding mode of half even. Suppose 2.4567, so it will be rounded to 2.46 because it is in even. Here we just simply rounding the number. So calculate BMI so far. After that else we will show an error. Okay, so error, show error, incorrect values, and here also this if condition, else show error if field is missing, if user is not putting any type of field. So we need to also make that function private function show error message, it is in string, so simply well snake bar. Here we will show the message in snake bar. You can also show the message in toast message also, but for simplification here I add snake bar for better looking. Here I add snake bar. So this is $sign.
dot set background background resources is dot color dot weight. You can use any color, but I use red, so you can use any color. So yeah, that's it. This is our main activity. Here we simply we check the user whether user is putting the value or not. If the user put the value, then we convert the weight into double, because weight is in string, so we need to convert it double. So here in height also we convert it to double, and we also divide it into 100, because we take the value in centimeter but we need to convert it into meter. So here we simply divide the value in by 100. So then we add our condition. If the weight is greater than 0 and weight is less than 600, and the height is greater than 0.5 and height is less than 2.5, but is here height is in meter and here weight is in kilogram. So if user put the value, then it will directly send the user to result activity with the BMI. Here we add the BMI function. As you see here, we create the BMI function here. Here we simply add our equation and we rounding off it. So this is the error message. So now we need to work on our result activity. If the user gets the BMI value, what we need to show them? Suppose if the user BMI level is less than 18.5, then it is like underweight, and if the user BMI level is greater than 25, he is in the overweight. So we need to show that kind of thing. So now val BMI equal to intent, BMI equal to intent dot grad double extra BMI, and here we simply add one default value, suppose minus 0.1, because if user get the one value, then it is underweight, but minus 0.9 is no just the default value. Here BMI is this. Make sure it is the same. It is same as here. Put extra BMI. Name should be same. So if BMI equal to minus 0.1, then we simply container dot visibility gone. Visibility gone. Visibility equal to view dot gone. So that's it. If the BMI level equal to regular minus 1, and then the container visibility is gone. Here container is our okay, sorry, I forgot to add ID here. ID equal to container, suppose result container. So here we need to change it to container visibility will be gone. Else we need to check for if the BMI level is less than 18.5. so else BMI level value dot text equal to BMI dot to string. Here we add the BMI value. If BMI less than 18.5, then we show the message container dot set background resource dot drawable dot yellow background. If a user is
less than 85. You see the yellow background. Okay, so BMI flag image view image resources. Here we simply add our tips and images here. So here we can add any images, any tips. Just we need to check the BMI level is less than 18.5. As you see here, I add the text and images according to the BMI level. Also here also. So that's it. If the user gets the BMI level less than 18.5, we get this kind of tips and images also. So let's run the app and check whether it is working or not. Let's run the app.
open my device. Enter the weight, suppose it's 65.5 and height is 150 suppose. So let's calculate the BMI. Yeah, it says it is overweight and also shows the tips with the images. So now let's try to, it is overweight, so let's change the weight to 45 and check. Yeah, in here BMI is normal. Now let's take the underweight, so let's reduce the weight to 30. Yeah, it's underweight. So yeah, our BMI calculator is working fine. So that's it. Now hit the like button and subscribe button if you are new, and please share the video. Thank you.